Once upon a time, in a quiet village surrounded by dense forests and rolling hills, lived a young boy named Eli. He wasn't strong like the blacksmith's son or clever like the baker's daughter, but Eli had something special: curiosity. One day, while cleaning the attic of his grandfather's house, Eli discovered an old leather scroll tied with a crimson ribbon. As he unrolled it, he realized it was a map, but not an ordinary one. This map had tiny letters that shimmered in gold and a whispering voice that only he could hear. The map whispered directions, riddles, and warnings. It spoke of a hidden valley beyond the hills, where the wind could speak, the trees could move, and the rivers sang ancient songs. It warned that only the brave, the kind, and the true-hearted could find the treasure buried beneath the stone of silence. Despite his fear, Eli decided to follow the map. He packed some bread, a flask of water, and his grandfather's compass. The journey was long and full of challenges. He had to cross a broken bridge, climb steep cliffs, and navigate through foggy marshes where shadows whispered doubts into his ears. At one point, he nearly turned back. A large owl, perched on a crooked tree, stared into his soul and said, "Many have tried, but few return." But Eli remembered what the map had said: only the kind will be guided. So he gave the owl some of his bread and continued on. Days passed. At last, Eli reached the valley. It was more beautiful than he imagined. Sunlight danced on the grass, birds sang in perfect harmony, and everything felt alive. In the center stood the stone of silence, just as the map had said. Kneeling, Eli placed his hand on the stone. Suddenly, the ground trembled and the stone split open to reveal a wooden box. Inside, there was no gold, no jewels, only a mirror. Confused, Eli looked into it. For the first time, he saw himself clearly: his courage, his kindness, his journey. That was the real treasure. The map had never led to riches. It had led him to discover himself. अब मैं हर जुमला इंग्लिश ज़बान में पढ़ूंगी और इसके बाद आपको उर्दू में इसका मतलब बताऊंगी। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मज़ीद इंग्लिश कहानियाँ उर्दू तर्जुमे के साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाइटल: द विस्परिंग मैप। अनवान: सरगोशी करने वाला नक्शा। Once upon a time, in a quiet village surrounded by dense forests and rolling hills, lived a young boy named Eli. एक दफ़ा का जिक्र है, एक पुरसुकून गांव में जो घने जंगलात और लहराती पहाड़ियों से घरा हुआ था, एली नाम का एक लड़का रहता था। He wasn't strong like the blacksmith's son or clever like the baker's daughter, but Eli had something special: curiosity. वो ना तो लुहार के बेटे की तरह ताकतवर था, ना ही नानबाई की बेटी की तरह होशियार, लेकिन एली के पास एक खास चीज थी: tajassus. One day, while cleaning the attic of his grandfather's house, Eli discovered an old leather scroll tied with a crimson ribbon. एक दिन, अपने दादा के घर की छत साफ करते हुए, एली को एक पुराना चमड़े का तुमार मिला जो एक गहरे सरख रबन से बंधा हुआ था. As he unrolled it, he realized it was a map, but not an ordinary one. जब इसने इसे खोला, तो उसे एहसास हुआ कि ये एक नक्शा है, लेकिन आम सा नहीं. This map had tiny letters that shimmered in gold and a whispering voice that only he could hear. इस नक्शे पर सुनहरी चमकदार हरूफ थे और एक सरगोशी करती आवाज थी जो सिर्फ वही सुन सकता था. The map whispered directions, riddles, and warnings. नक्शा रास्ते, पहेलियां और खबरदार करने वाले पैगामात सरगोशी में बताता था. It spoke of a hidden valley beyond the hills, where the wind could speak, the trees could move, and the rivers sang ancient songs. ये पहाड़ों से परे छुपी हुई एक वादी के बारे में बताता था, जहां हवा बोल सकती थी, दरख्त हरकत करते थे और नदियां कदीम गीत गाती थीं. It warned that only the brave, the kind, and the true-hearted could find the treasure buried beneath the stone of silence. इसने खबरदार किया कि सिर्फ बहादुर, मेहरबान और सच्चे दिल वाले ही खामोशी के पत्थर के नीचे दफन खजाने को ढूंढ सकते हैं. Despite his fear, Eli decided to follow the map. खौफ के बावजूद, एली ने नक्शे का पीछा करने का फैसला किया. He packed some bread, a flask of water, and his grandfather's compass. इसने कुछ रोटी, पानी की एक बोतल और अपने दादा का कुतुबनमा बांधा. The journey was long and full of challenges.
सफ़र तवील और मुश्किलात से भरपूर था. He had to cross a broken bridge, climb steep cliffs, and navigate through foggy marshes where shadows whispered doubts into his ears. इसे एक टूटा हुआ पल पार करना पड़ा, खड़ी चट्टानें चढ़नी पड़े और धंध भरी दिलदिलों से गुजरना पड़ा जहां साए इसके कानों में शक की सरगोशियां करते थे. At one point, he nearly turned back. एक मौका पर वो तकरीबन वापस मुड़ गया. A large owl, perched on a crooked tree, stared into his soul and said, "Many have tried, but few return." एक बड़ी उल्लू, जो एक टीढ़े दरख्त पर बैठी थी, उसकी रूह में झांककर बोली, बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कम ही लौटे हैं. But Eli remembered what the map had said. Only the kind will be guided. लेकिन एली को याद आया कि नक्शे ने क्या कहा था, सिर्फ मेहरबानों को रहनुमाई मिलेगी. So he gave the owl some of his bread and continued on. लिहाजा उसने उल्लू को अपनी रोटी में से कुछ दिया और सफ़र जारी रखा. Days passed. दिन गुजरते गए. At last, Eli reached the valley. आखिरकार एली वादी तक पहुंच गया. It was more beautiful than he imagined. Sunlight danced on the grass, birds sang in perfect harmony, and everything felt alive. ये इसकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत थी. धूप घास पर नाच रही थी, परिंदे एक दिलकश हम आहंगी में गा रहे थे और हर चीज़ जिंदा महसूस होती थी. In the center stood the stone of silence, just as the map had said. दरमियान में वही खामोशी का पत्थर खड़ा था, जैसा कि नक्शे ने बताया था. Kneeling, Eli placed his hand on the stone. घुटनों के बिल बैठकर एली ने पत्थर पर अपना हाथ रखा. Suddenly the ground trembled, and the stone split open to reveal a wooden box. अचानक जमीन कांपी और पत्थर फट गया, जिसके नीचे से एक लकड़ी का डब्बा निकला. Inside, there was no gold, no jewels, only a mirror. अंदर कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक आईना था. Confused, Eli looked into it. हैरत से एली ने इसमें झांका. For the first time, he saw himself clearly. His courage, his kindness, his journey. पहली बार इसने खुद को साफ देखा, इसकी बहादुरी, इसकी मेहरबानी, इसका सफ़र. That was the real treasure. यही असल खजाना था. The map had never led to riches. नक्शा कभी दौलत की तरफ नहीं ले जा रहा था. It had led him to discover himself. ये इसे खुद को दरियाफ्त करने की तरफ ले जा रहा था. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं. अब तक हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. अगली वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.